Tajdar Khan welcoming you to the most kick-ass event of the year. This is the Mixed Martial Arts Federation India presents the Combat Sports Festival. We are very thankful to our partners, beverage partner, Hell Energy Drink, Hydrate partner, ISIL, protein partner, Max Protein, hospital partner, SRV Hospital, medical partner, Meditwa, NGO partner, SKID, and a big thanks to the Mixed Martial Arts Federation of India. This Combat Sports Festival has been a 3-day festival with fighters and athletes from all over India, 12 states, as well as the neighboring countries, Nepal. So tonight, it's going to be chaotic. But before we begin, ladies and gentlemen, I have this one question to ask. Are you ready? Are you ready? I did not hear you guys. I said, are you ready? Then let the madness begin, ladies and gentlemen, because we are starting with the first part of the night, which is for the middleweight category. And introducing first, from the red corner, Shamshad Shah. And his opponent from the blue corner, Balere. Yes, ladies and gentlemen, this is the Mixed Martial Arts Federation India presents the Combat Sports Festival. This is the National MMA Championship, and we are starting with the first bout of the night, which is for the middleweight category. And introducing first from the red corner, weighing in 83 kilos, standing at a 5 feet 9 inches tall, representing Maharashtra, Shamshad Shah. And his opponent from the blue corner, weighing in 82 kilos, standing at a 5 feet 4 inches tall, representing Maharashtra, Balere.
Y'all can scream louder than me. Referee for this bout, referee Zubair. Always follow my command. When I say stop, I want clean fight, no false attack. Just distance. And we'll begin the first fight in the middleweight division. A certain reach advantage for Shamshad. Both fighters from Maharashtra. Certain reach advantage, some length advantage. We'll see अगर उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं. I can say. शुरुआत में टेक डाउन की कोशिश. ईसा बलेरी यहाँ पे डबल लेग टेक डाउन अर्जित किया. शुरुआत में ही गिलेटिन में यहाँ पे दबोच रखा है, लेकिन एंगल से निकलने की कोशिश और पुश करके हाथ को गिलेटिन से निकले. और अब टॉप कंट्रोल ईसा बलेरी के पास अपने कॉर्नर के ठीक सामने, लगातार इंस्ट्रक्शन सुनते हुए. All the reach advantage that Shamshad had has been nullified because he's on the ground right now. फुल माउंट पे ट्रांजिशन किया, बहुत खूबसूरत ट्रांजिशन फुल माउंट पे. मुश्किल पोजीशन यहाँ पे शमशाद के लिए. देखना होगा ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश कर पाते हैं कि नहीं. कोशिश कर रहे हैं. रेफरी जुबैर बहुत ध्यान से देखते हुए यहाँ पे अपने कॉर्नर के ठीक सामने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सुनते हुए. एंड इन वेरी गुड पोजीशन हियर. पॉस्चर कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे शमशाद. एंड वी कैन सी कोई भी लेवरेज लेने का मौका नहीं मिल रहा है ईसा को. पॉस्चर अप नहीं कर पा रहे हैं, बड़े पंचेस नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन बॉडी पे और उसके बाद सर पे जाते हुए लेवल चेंज करते हुए फुल माउंट पे हैं. लेकिन कब तक इस पोजीशन का फायदा उठाना पड़ेगा उनको. Referee Zubair is giving him a lot of time on the ground. He's been smothered completely, but we'll see how Shamshad can make a recovery from here. पूरी तरह से स्मॉदर्ड किया हुआ है, लेकिन सर पे पंचेस नहीं लग रहे हैं. क्या यहाँ से आर्म ट्रायंगल लेने की कोशिश करेंगे? हम देखेंगे. केज के खिलाफ दबोचा हुआ है, फ्लैटन आउट करना पड़ेगा, स्टेप ओवर करना पड़ेगा दूसरी साइड. चोक करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन he'll have to step over to get an arm triangle. Right now he's punching the body. He's remaining active in the top position, but he's not been able to put Shamshad in actual real trouble. शमशाद ने अभी तक पॉस्चर कंट्रोल किया हुआ है, डिफेंसिव हैं, लेकिन कब तक इस पोजीशन पे रोक पाएंगे ईसा को? क्या ईसा पॉस्चर अप कर पाएंगे? 10 सेकेंड की वार्निंग यहाँ पे आ चुकी है. इस राउंड के खत्म होने के बहुत करीब. सर्वाइव कर पाएंगे इस राउंड को शमशाद, लेकिन जरूर ईसा के नाम गया ये राउंड. एक अच्छा राउंड ईसा के लिए. We head to round number 2. A good round, a good first round for ईसा. शमशाद ने पहला राउंड सर्वाइव किया. हमको देखना होगा किस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज होती है. क्या अपने रीच एडवांटेज का इस्तेमाल करते हैं इस राउंड में? डिस्टेंस शुरुआत में रखा नहीं था, बहुत तेज़ी से वो डबल लेग टेक डाउन पहले राउंड में मिला था. ये डिस्टेंस बनाना पड़ेगा.
अपनी स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा शमशाद को। और अच्छा प्रेशर यहाँ पे ब्रॉल करते हुए ईसा ने तेजी से डिस्टेंस क्लोज किया और पहला राइट हैंड थ्रो किया। बॉडी किक से जवाब यहाँ पे शमशाद का। ईसा के कॉर्नर का कहना है कि आप केज पे दबाइए, आप प्रेशर करिए, पीछे लेके जाइए। बहुत ही अग्रेसिव शुरुआत करी थी लेकिन शमशाद यहाँ पर रिकवर करते हैं। बड़े राइट हुक की कोशिश यहाँ पे शमशाद की। फुटवर्क थोड़ा कम, फ्लैट फुटेड लग रहे हैं। ईसा का निरंतर प्रयास केज के अगेंस्ट प्रेशर करने का, जैसा कि उनके कोचेस कह रहे हैं, लेकिन शमशाद इस राउंड में थोड़े से कॉशियस थे। ओह, दे थ्रोइंग बिग राइट हैंड, लूपिंग हुक्स। ओह, बॉडी किक को रोका और एक राइट हुक लगाने में कामयाब रहा ईसा। गार्ड हैज बीन डाउन फॉर बोथ द फाइटर्स। बॉडी किक को कैच किया था ईसा ने, लेकिन ब्रॉल करने को तैयार है। सेंटर ऑफ द केज खड़े होके ब्रॉल कर रहे हैं ये दोनों फाइटर्स। स्ट्रेट पंचेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं है, हुक्स देखे हमने दोनों फाइटर्स से। ओह, एक और ओवरहैंड राइट यहाँ पे शमशाद का मेन वेपन। ओवरहैंड राइट है लेकिन राइट हैंड यहाँ पे ईसा का और एक नॉकआउट विक्ट्री। एक बड़ा राइट हैंड। इसके ठीक पहले एक अच्छा राइट हैंड लगाने में कामयाब रहे थे शमशाद, लेकिन ईसा ने अच्छी टाइमिंग देखी, ओपनिंग देखी और एक राइट हैंड से यहाँ पे ये फाइट फिनिश। सेकेंड राउंड की शुरुआत अच्छी करी ईसा ने और आखिरकार एक राइट हैंड से नॉकआउट ढूंढा। ब्लू कॉर्नर यहाँ पे विजयी। All right, that was a cracker of a fight. Did you guys enjoy? यार तो एक तालियां बजा दो फाइटर्स के लिए यार, जोरदार ये बात। All right, the judges have made their decision and your winner of this bout by TKO, Isa Balere. The winner will be getting a hamper from Max Protein, and they'll also be getting a silver medal and a gold medal. I would like to call on stage Dr. Dipesh and Mr. Anupam. Mr. Anupam will give away the silver medal to the runner-up. Mr. Anupam will give the silver medal to the runner-up. And Dr. Dipesh will give the medal to the gold medal to the winner, Isa Balere, ladies and gentlemen. And the winner will also be getting a hamper from Max Protein. Zordar taaliyan ho jaye. Congratulations to the fighters, and thank you Dr. Dipesh and Mr. Anupam. Isa Balere victorious in the middleweight division.